Morning centers. I think in the last lecture we have completed question number 6. Today we are starting off with question number 7. Okay, question number 7. It is the question where we need to calculate the portfolio risk and return, and it is showing the portfolio which is comprising of 3 securities. The questions which we have done in the last lecture were including the securities of, or I would say including the portfolio of 2 securities. Today we are starting off with a question which is involving a portfolio of 3 securities. So if I talk about question 7, securities D, E and F have the following characteristics with respect to expected return, standard deviation and correlation between them. So you have been given 3 companies D, E, F, उनके रिटर्न्स दिया हुआ है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है. मेक वन चेंज, दैट इज जो रिटर्न के बाजू वाला कॉलम है वहां पर बीटा लिखा हुआ है, उस बीटा को कैंसिल करके सिग्मा लिख दीजिए, बिकॉज इट इज गिवन एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट एज बीटा. और उसके बाजू में आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है. सो वी हैव गॉट 3 कंपनीज D, E and F. For these 3 companies we have been given returns. Returns are given as 8%, 15% and 12%. Standard deviation is given as 2%, 16% and 8%. And we have been given correlation coefficient. So यहां पर जो सिक्योरिटी D है उसे मैं 1 कहता हूं, सिक्योरिटी E को हम लोग 2 कहेंगे और सिक्योरिटी F को 3 कहेंगे. If you look at the correlation coefficient, the first correlation coefficient is given between D and E. So यहां पर मैं R लिख देता हूं और D और E के बीच का कोरिलेशन है. सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 1 and 2 इज 0.4. उसके बाजू में D और F का दिया हुआ है, दैट इज 1 and 3. सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 1 and 3 इज 0.6 and correlation coefficient of 2 and 3 is 0.8. These are the informations which are given to us. On the basis of this information which we are going to use for the calculation of expected risk and return. So first of all we are calculating expected return. Expected return which will be considered as your R bar P. As we are having 3 securities in the portfolio, so my R bar P will be calculated as W1 R1 plus W2 R2 plus W3 R3. अब यहां पर अगर इस
टेबल के नीचे की एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, वो अगर हम लोग पढ़े, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कंपोज्ड ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट्स इन ईच। सो इक्वल इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है, तो तीनों के वेट्स हम लोग कंसीडर करेंगे 0.33, 0.33, 0.33, as it is talking about equal weights. Now putting the values in the formula, my W1 R1 would be 0.33 into 8% plus 0.33 into 15 plus 0.33 into 12, and solving this will give us the expected return of a portfolio. So the calculation of this gives us 11.55%. This is something which will be considered as our expected return of the portfolio. Now, talking about the second part in the same question, it is talking about the risk of the portfolio. Expected risk. So I am writing the formula of the variance, जिसका हम लोग रूट करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा. सो वेरियंस ऑफ अ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12 plus 2 W2 W3 sigma 2 sigma 3 and R23 plus 2 W1 W3 sigma 1 sigma 3 R13. So here putting down the values, 0.33 square multiplied by standard deviation of security D, that is 2%, so 2 square plus 0.33 square multiplied by 16 square plus 0.33 square multiplied by 8 square plus 2 into 0.33 into 0.33 into 2 into 16 into R12 is given as 0.4 plus 2 0.33 sigma 2 is 16, sigma 3 is 8 multiplied by R23, it is given as 0.8 plus 2 0.33 2 and 8 multiplied by the correlation coefficient of 0.6. Now we need to solve this. So first of all, we are writing the square and multiplication of this. So it will be 0.4356. Now this 0.4356 is the answer of the first part, that is 0.33 square multiplied by 2 square, उसका आंसर ये आ रहा है, plus 0.33 square into 16 square, it is given as 27.88 plus 0.33 square into 8 square, $6.97 plus this entire thing 2, so it will be taken as 2
multiplied by 0.33 multiplied by 0.33 multiplied by 2 multiplied by 16 multiplied by 0.4. It gives us 2.79 plus the second one 2 into 0.33 into 0.33 into 16 into 8 into 0.8. It is giving us 22.30, and plus the last one 2 into 0.33 into 0.33 into 2 into 8 into 0.6. It is giving us 2.09. इन सब का हम लोग एडिशन करेंगे 0.4356 प्लस 27.88 प्लस 6.97 प्लस 2.79 प्लस 22.30 प्लस 2.09. It gives us 62.4656. Now this is something which is considered as our variance of portfolio. इसके बेसिस पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे. So standard deviation of portfolio equals to under root 62.4656, and which gives us the answer of 7.91. So our expected return from this portfolio is 11.55%, and the expected risk is 7.91%. कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. Done.
Done. Okay, centers, any doubts? Gandhidham center, there is nothing on the right hand side. The board is getting finished over here. This was your first part and this was your second part. Okay, starting with question number 8. Now, question number 8 says that you are considering an investment in one or both of the securities X and Y, and you are given the following information. You have been given the security X and Y along with the possible rates of return and the probabilities respectively given for them. And you are required to calculate three things. The first thing is calculate the expected return for each security separately. So we have to find out the return of the security individually in case of a single security case. And second, in the second part of the same question, and for portfolio comprising 60% of X and 40% of Y, assuming no correlation between the rates from the shares comprising of the portfolio. So the correlation coefficient is assumed to be 0. Second, calculate the expected risk of each security separately and of the portfolio as defined above. Measure risk by standard deviation of returns from the expected rate of return. So we have to find out the standard deviation. And outline the objectives of portfolio diversification and explain in general terms why the risk on individual securities may differ from a portfolio as a whole. Okay, so first of all we are starting off with the calculation of risk and return for securities. Now in this particular question
This is something which we would be doing for the first time. We are calculating the return and risk of the security on the basis of the probabilities. Because यहां पर हम लोगों को probabilities दी हुई है. So, what we are going to do is, we are going to find out the expected risk, expected return, I would say, expected return and expected risk of X and Y individually. और फिर दोनों सिक्योरिटीज के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क आते हैं उनका यूज करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग इट सेपरेटली. सो आई एम मेकिंग अ हेडिंग ओवर हियर. Calculation of expected risk and return. पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिक्योरिटी X. Now, as we are doing it for security X, let us take the information which is given for security X. The possible returns are given as 30%, 25% and 20%. So first of all, I'll be writing RI over here, which are my returns. 30, 25, 20. Probabilities are given as 0.3, 0.4, 0.3. Probabilities are 0.3, 0.4, 0.3. As I don't need to repeat this, your total probability would be 1. Now, first of all, we are going to calculate the expected risk and return of the portfolio. Sorry, portfolio नहीं, individual security. So, यहाँ पर मैं formula लिख देता हूँ. Expected return, that is R bar. R bar equals to sigma PIRI, and expected risk, which is standard deviation, equals to sigma PI into RI minus R bar square, इसका रूट. Now, as we have got RI and PI, हमारे पास returns और probabilities है. So first of all, we are doing probabilities multiplied by the respective returns. So 30 multiplied by 0.3 will give you 9. 25 multiplied by 0.4 will give you 10. And 20 multiplied by 0.3 will give you 6. And the total of this will give you 25. Now, here I can say that my expected return for security X is 25%. So this is my expected return of security X. For the purpose of calculation of standard deviation, the formula says that summation of probability multiplied by Ri minus R bar square. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए Ri minus R bar square, जिसको हम लोग probability से multiply करेंगे. So first of all, let us calculate Ri minus R bar. Now our expected return is called R bar. तो हमारा R bar हो जाएगा 25%. इन रिटर्न्स में से, रिस्पेक्टिव रिटर्न्स में से हम लोग हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करेंगे. So Ri minus R bar, 30 minus 25 will give you 5. 25 minus 25 will give you 0. And 20 minus 25 will give you minus 5. Now we are doing Ri minus R bar square. So this will be 25, 0 and 25. And now we are doing last column Pi into Ri minus R bar
स्क्वेयर। सो आर आई माइनस आर बार स्क्वायर की जो अमाउंट्स है उन्हें हम लोग उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25 इंटू 0.3 will give me 7.5. Anything multiplied by 0 will be 0, and this will be again 25 multiplied by 0.3, so it will be 7.5. Now this is giving me the answer of 15. Now this 15 is the summation of pi into ri minus r bar square. For the calculation of standard deviation, we need to take a under root of that. So standard deviation would be under root of sigma pi into ri minus r bar square. So it is under root of 15. So the answer gives me as 3.87. So my standard deviation is 3.87 percentage. So here we can write that R bar of security X is 25 percentage and sigma of security X is 3.87 percentage. And the same way we are going to do for security Y. So here सिक्योरिटी वाई, सो यहां पर हमारे रिटर्न्स दिए हुए हैं, सिक्योरिटी वाई के रिटर्न्स दिए हुए हैं 50, 30 एंड 10। और यहां पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज दी गई है 0.2, 0.6 एंड 0.2। वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। सो अगेन हियर we are doing pi ri. 15 to 0.2 will give you 10, 30 into 0.6 will give you 18, and 10 into 0.2 will give you 2. So my pi ri gives me 30. इसके बेसिस पर ri minus r bar, so 50 minus 30 will give me 20, this will be 0 and this will be minus 20. Here Ri minus R bar square, so this will give me 400, 0, 400, and Pi into Ri minus R bar square. This will give me 400 into 0.2, so 80, 0. And again 400 into 0.2 will give me 80. So this is giving me the total of 160. So here I can write it as expected return, that is R bar of Y is 30%, and sigma of Y equals to under root 160, which will give me 12.65%. 12.65%. अब ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ, और आई वुड से दिस आर द आंसर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 सेज कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी सेपरेटली, and the first part of question 2 says calculate the risk of each security separately. Now moving to the second part of those questions, so calculate the risk and return of the portfolio if the weightages are 0.6 and 0.4 respectively. So here now I am talking about a portfolio comprising of security X and Y. Security X and Y जिनके वेट्स है 0.6 और 0.4। अब इनके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है 25 और 30, वो हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स विल बी टेकन एज अ रिटर्न फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न,
and expected return of y will be taken for the calculation. और यहां पर भी उनका स्टैंडर्ड डेविएशन गिना जाएगा. So that will be 3.87 and 12.65. और इसके बेसिस पर we are supposed to calculate the portfolio return and risk. So here I am writing portfolio return. So RP equals to W1 R1 plus W2 R2. So that will be 0.6 into 25 plus 0.4 into 30. So this will give me 15 plus 12. So my portfolio return will become 27%. And the second part is portfolio risk. Again taking the formula of variance, W1 square, W2 square, W1 square, sigma 1 square plus W2 square, sigma 2 square plus 2 W1, W2, sigma 1, sigma 2, R12. अब यहां पर अगर आप अपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े, सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट. For the portfolio comprising 60% of X and 40% Y, assuming no correlation between the rates of return from the shares comprising of the portfolio. So here we have been given that R12 equals to 0. So ये 0 हो गया, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में 0 आ जाएगा. सो योर दिस पार्ट, एंटायर दिस पार्ट विल बिकम 0. सो सॉल्विंग इट अगेन, सो माय W1 स्क्वायर विल बी 0.6 स्क्वायर multiplied by 3.87 square plus 0.4 square multiplied by 12.65 square plus 2, 0.6, 0.4, 3.87, 12.65 and 0. अब यहां पर 0 है तो ये पूरा पार्ट आपका 0 ही हो जाएगा. So we just need to make this calculations only. So first part, calculating first part, is giving you 5.39 plus second part is giving me 25.60. So my variance of portfolio gives me 30.99. So standard deviation will be under root 30.99, which gives me the answer of 5.57%. So if you look at this, these are my expected return of individual securities which come between 25 and 30%. If I invest in this securities in the weightage of 60% and 40%, then my portfolio return comes between 27%. That is the range between 25 and 30. इन दोनों के बीच में मेरा रिटर्न आता है. एंड पोर्टफोलियो रिस्क, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क था, दैट वाज 3.87 एंड 12.65. सो अगेन माय पोर्टफोलियो रिस्क इज कमिंग इन बिटवीन देम. नाउ दिस इज समथिंग वेयर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन अबाउट द सिचुएशन कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. अगर हम लोग सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट करते हैं, then we are getting a return of 25%, considerably at a lower risk. If we invest in security Y,
we are getting higher return, but at considerably higher risk. But if we make a combination of X and Y, and if we make a portfolio of that, if you can see that, we are able to get a higher return at comparatively lower risk. क्योंकि यहां पर आप देखिए कि रिटर्न मेरा 2% बढ़ा 25 की कंपेयर में करूं तो, हाँ 30 की कंपेयर में करूं तो 3% कम भी है, लेकिन अगर 30 की कंपेयर करता हूं तो देखिए उसका रिस्क कितना है और उसके सामने पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है. द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी वाइज 12.65, द रिस्क ऑफ portfolio is 5.57 only. So this is something which is called the benefit of diversification. अगर कोई सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है और ऑफ कोर्स उसका रिटर्न भी ज्यादा है, then rather than investing into that security alone, you can make a portfolio with some another another security which has got a comparatively lower risk and lower return, which will match the things, which will give you considerably average high return with a lower risk. So this is your calculation of individual securities and the portfolio risk and return. Any doubts in this? और जो मैंने explanation दिया, that explanation is for the third question. Any doubts? कॉपी कर लीजिए.
Done. Write down the notes for part C. The main objective of portfolio diversification is to reduce the risk. Of the portfolio. So that the investor can earn better returns at the least possible risk. Better returns at the least possible risk. Next paragraph. Risk of the portfolio will be different from the risk of portfolio will be different from the risk of securities involved in the portfolio. Because of the different levels of correlation coefficient
correlation coefficient between those securities. Between those securities. The risk of the portfolio would be high. Risk of the portfolio would be high if those securities are positively correlated. Positively correlated, and the risk of the portfolio would be decreasing if the correlation between them is zero or negative. Correlation between them is zero or negative. The portfolio risk will be zero if the securities in the portfolio are perfectly negatively correlated. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रिफर क्वेश्चन 4. In question number 4 we have done the calculation of risk of the portfolio with different levels of correlation coefficient. So उसी का बेस लेकर आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. Okay, Sanders. Now, question number 9 onwards, we are going into the second part of the chapter, which is involving CAPM model, security market line, Markowitz model, capital market line, and project beta and all those things. But before getting into this, वो हम लोग आज वैसे भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, because for that first of all I need to make you understand the entire concept, theory, formulas, all those things. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे. बट हाँ, आज के लिए जो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है, here what we have done, we have calculated the risk and return of the individual securities, और उसके बेसिस पर हम लोगों ने पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट किया. बट इन दिस portfolio there were two securities. There can be a same kind of situation where you can have three securities along with the returns and probabilities. तो आप लोगों को तीनों सिक्योरिटीज के इंडिविजुअल रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है, और फिर उनके जो रिस्क और रिटर्न है उनका यूज करके यू नीड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क फॉर थ्री सिक्योरिटीज. So before starting with our next part, we will do one question which is on a later side in the chapter. Look at question number 21. I hope you would have got the question. Question 21 says that Mr. Z owns three securities and has estimated the joint probability distribution of returns in percentage.
So you have been given the six possible outcomes of security A, B and C respectively along with the probabilities. यहां पर एक चीज सेम है कि तीनों सिक्योरिटीज के लिए यू हैव टू टेक द सेम सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड टेबल के नीचे देखिए, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड return and standard deviation of portfolio if Mr. Z invests 40%, 25% and 35% of his resources in the securities A, B and C respectively. Assume that the return of each security is completely uncorrelated with the return of other securities. So here there is a small change. हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन 8 किया उसमें हमारे पास दो सिक्योरिटीज थी X एंड Y. यहां पर हमारे पास 3 सिक्योरिटीज है A, B एंड C and we have been given the weights for them 40%, 25% and 35%. So my weightage would be 0.40, 0.25, 0.35. ये हमारे वेटेज है और आप लोगों को दिया हुआ है दैट द सिक्योरिटीज आर अनकोरिलेटेड. सो हियर योर R12 इज 0, R23 इज 0 एंड R13 इज ऑल्सो 0. अब यहां के जो RI और सिग्मा I होंगे, दैट इज योर रिस्क एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस सिचुएशन. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू फॉर सिक्योरिटी A. सो यहां पर उनके रिटर्न्स लिखेंगे, यहां पर उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे, PIRI, RI माइनस R बार उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ A, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ B, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क फॉर C. और इनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क आएगा वो आप यहां पर लिखेंगे और इन सिचुएशंस को यूज करके यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क. सो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला वही होगी W1R1 प्लस W2R2 प्लस W3R3 और पोर्टफोलियो रिस्क की फॉर्मूला भी वही होगी जो हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 में यूज की, पोर्टफोलियो ऑफ 3 सिक्योरिटीज. लेकिन यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, दैट हियर when we are calculating the portfolio of 3 securities in this particular question, we can limited or we can restrict our formula to sigma or variance of portfolio equals to W1 square sigma 1 square plus W2 square sigma 2 square plus W3 square sigma 3 square. इसके आगे की जो हम लोग 2W1 W2 वाला फॉर्मूले जो लिखते हैं वो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर केस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा. R12 आएगा, R23 आएगा, R13 आएगा जिसकी वैल्यू 0 है. क्योंकि उनकी वैल्यू 0 है तो उस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी जो हम लोगों ने यहां पर भी देखा था. तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर फॉर्मूला ओनली टू दिस पार्ट और इसका कैलकुलेशन करके उसका अंडर रूट कीजिएगा तो यू विल गेट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग विच यू हैव टू डू फ्रॉम योर होमवर्क. ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका आंसर टैली करेंगे या वेरीफाई करेंगे. एनी डाउट्स सेंडर्स? Okay, fine. That's done for the day. Next lecture we'll start with the second part. और अभी से थोड़ा बता देता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन होगा पहले के पार्ट में. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि चाय वाय पी कर आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूरी पड़ेगा, क्योंकि उन कंसेप्ट्स को समझेंगे तो उन कंसेप्ट्स के बेसिस पर सम्स करना बहुत इजी हो जाएगा. So
See you in the next lecture. Hope you would have enjoyed the session. Thank you so much.